Okay, today we have, guys, today we have celebrity astrologers, very knowledgeable astrologers, okay. And we have Parul Behan from Bombay, okay. She's a master in nakshatras. Okay. When I used to lecture, okay, she and Jolly Behan used to give me complexes on nakshatras. Okay. They're so knowledgeable. Okay. Today, by the way, we are all doing RK Goel workshop on Bhrigu Nandinadi. And then we have Jolly Behan. Great reader, great astrologer. She learns from somebody who's very secretive, who teaches only to women. Okay, so I want all the knowledge from Jolly. Okay, because you have some great secret knowledge. Okay. Yes, you have. So I'm going to ask them. I am a student. No, I'm still learning She's not under a my student. great No. sir Rajan Sharma. No. We are still a student of him. No, you are a genius. You got to see her knowledge on nakshatras, on combinations, everything. And we have. She is a great guru of mine, Harsha Behan. Jalwankar. Okay. And she's a She celebrity is a renowned astrologer. astrologer of Bombay. Renowned. And I think your clients have been Amitabh. Bal Thackeray has given a renowned astrologer declared she's a Harsha. I mean, you name the celebrities, all of them have consulted her. Including And Bal she's Thackeray. sitting right at the end of our Bombay. conference in the last row. She's sitting quietly making notes, avoiding to talk to me. Okay, all the way met before. Yeah. So I'm going to ask them. Okay. And your sir was, your group was right? So I'm going to ask one technique. We go. One technique. So please share one technique that you found working properly. कोई सब मोटा मोटा. Can you first just say so that I can come to know what I really want to Anything, say? some combination that you found working. Say for example for divorces or love marriage. You know, Shukra works in Naumansh. Shukra Ketu Naumansh. in Naumansh. Yeah, Conjunct. Yeah. And Tula degree 16 to 20 degree of Tula. That gives you a divorce. Yeah. That is Rajan Sharma, my guru has taught us. मैं समझा नहीं. तुला में it should be there. Tula की 16 degree to 20 degree. 16 to 20 degree. Venus Ketu should be. No, not Venus. Venus in Naumansh. Venus Ketu in Naumansh. But what is the thing in Tula? Tula में क्या होना चाहिए? Tula का degree, Lagna degree, 16 degree to 20 degree. That is giving you a divorce. Yeah? Yeah. So anybody That is- born with Libra ascendant, Yeah. 16 degree to 20 degree. Yeah. That gives you a divorce. that gives you. And in Nauman Shukra Ketu conjunction in one Rashi, that also gives you a divorce. Didn't I tell you she's brilliant? She hides her knowledge. Show me No, anybody my who guru knows is 16 to great. 20 degree. He is a good teacher. Show me anybody who has given this ascendant 16 to 20 degree. I mean, at least I'm not so well read, but still I do not know this. So brilliant. My I mean, great thank you. guru Rajan Sharma. Rajan ji. Today Great. I am That's here all. with his knowledge. He's He is a back of He's one of the best teachers in India, in Bombay. So something like this, marriage का teacher. Oh, sorry. मैडम थोड़ा नजदीक मैरिज में डिवोर्सेस में क्या what is it? थोड़ा आगे आ जाइए तो maybe the sound is Rauni Dashama, Chandra ki Rani In seventh When disaster house, or in seventh house, Surya Rahu or Shani Rahu, in impact of Shani Rahu and Surya Rahu. And even Saptam is good. Sometimes हम लोग को लगता है कि सेवेंथ में है तो ही. Even with Saptam is, it is a 6, 8 and it is a 12 and affected by Surya Rahu, then it is a lead to be a little. okay, let me understand this one second. Seventh house, if you see Surya Rahu Surya Rahu. or Surya Rahu impact in seventh house or even first house. first house Surya Rahu, that is Sun Rahu, and seventh house Sun Rahu. Sun Rahu. It gives divorces or Because, separation. Separation, but it is a go with legal only. Acha, it will We be. cannot, it is a lead to be a very, it is a, even it is a affected with Mars. Okay. Then it is a with duality and like, no, it is a Physical abuse kind physical of. abuse Okay. and it is And a you are saying if Saptamesh is also, the Saptamesh 7th lord seventh lord. with Surya Rahu. Seven, it is a, Then- it is even
Especially if it is in 6, 8, 6 and 12. 6, 8 and 12. 12. Something good, simple technique. I want you guys to test this technique. Post your comments under the comment section. Okay. Now, we want your experience. Wherever in the fourth house, Shani Rahu is aspected with the seventh floor. So it's always going to be the double character of the opposite side. मीन्स मैं वापस से समझने की कोशिश करता हूँ. फोर्थ हाउस में सन राहु, Shani Rahu, शनि राहु, एंड एस्पेक्टेड बाय seventh floor. सेवेंथ लॉ. सो मीन्स क्या होगा? So उससे the husband is always going to be only negative with the wife, ओके. but outside he is a two double character. He always use somewhere out he is very different, and in the house he is going to be very different. He may be hit to the wife. Oh. So it is, and unnecessarily wife is going to get separated emotionally by the husband, but divorce will not be. Divorce will not happen. Okay. That's a good point. What were you saying about some dasha or something? अमित भाई. हाँ, राहु की दशा में अगर चंद्र नवमांश में चंद्र से राहु की दशा चल रही है और नवमांश में चंद्र से 8वें जब शनि जाता है तो सम डिजास्टर इन राहु दशा. ये CS पटेल का टेक्निक है ना? एंड इट वर्क्स बिकॉज इट वर्क्स विद मी. Yeah. Okay. Can you just explain it once again so in English so that more about राहु की दशा चल रही है in Rahu Dasha. ये Rahu Dasha should be running. बट नवमांश में In Navmansh you see. चंद्र से 8वें जब गोचर का शनि जा रहा है Okay. In Navmansh, wherever your Navmansh Chandra is there, Navmansh Chandra, from there see the 8th house. 8th house If में अगर Saturn शनि जा रहा है, transits, if Saturn some transits, disasters happen some disasters. So in family Okay. with your life like everything. this Saturn, you are seeing transit Saturn of 2.5 years, or you are seeing the Navmansh transit of Saturn. नवमांश में चंद्र से 8वें गोचर में जा रहा है. Say for example, right now Saturn is in Sagittarius. Yeah. Okay. Suppose Sagittarius. Okay. So Chandra should be where in Navmansh? Suppose Taurus. Taurus. Okay. Yeah. So from Taurus, you see the Navmansh, you see Chandra in Taurus, and you notice that It is eight. Saturn is going through Sagittarius. So that 2.5 years Yeah. will be troublesome, especially if you have In Rahu Dasha. in Rahu Dasha. And it works. It works. This is a technique by Patel sir. By CS पटेल की 100% वर्क करती है. Yes. और मैंने ये भी कहा जब सप्तमेश अगर उसके घर से सेकंड हाउस में भी केतु जाता है तो 100% डिवोर्स देता है, या कोई ग्रह की कारक तत्व से रिलेटेड फैमिली में प्रॉब्लम होता है, या ये व्यक्ति झगड़ालू होती है. चंद्र है सप्तारा नक्षत्र राहु के नक्षत्र का हो, सप्तमेश अगर सेकंड हाउस में जाता है In natal chart. नेटल चार्ट, Seventh lord in the second house. या केतु के साथ जाएगा या मंगल केतु हाँ. तो डिवोर्स होगा, If it is with Ketu or with Mangal Ketu or whatever. Okay. या राहु के नक्षत्र का कोई व्यक्ति है जैसे चंद्र हो गया सप्तारा नक्षत्र समझ या मकर लग्न हाँ. सो कुंभ राशि सप्तमेश हो गया उसका And it is in Rahu's राहु nakshatra. नक्षत्र, तो व्यक्ति ऐसे ही घर में झगड़ालू आते हैं. बट समथिंग और दी अदर हैपेंस विद दैट पर्सन, कारक तत्व उसके ऊपर, Okay. एंड दिस वर्क्स. So this person whom you get married to or some family member comes सप्तमेश in, अगर उसका सेकंड हाउस में गया तो बहुत देखना चेक करना जरूरी है. okay, कि ये गलत इंसान से शादी शादी नहीं हो करे. गई तो वो तो ऋणानुबंध है. हाँ, that's really not a man. So person will kind of और marry केतु के somebody. साथ आएगा तो 100% डिवोर्स. And if it is in Ketu, केतु वो मंगल केतु है मंगल केतु. तो डेफिनेट जैसे तुला लगन में सप्तमेश मंगल है, why? अगर वो गया है वृश्चिक का मंगल हो गया स्वग्रही होने के बाद फिर भी केतु के साथ है तो 100% उसकी डिवोर्स. Let's talk something good. पैसा कब आएगा? मनी के लिए तो शी बेटर. अच्छा, हम लोग सब लोग आपको ही पूछेंगे. The yogas for the money. या और ट्रांजिट, कुछ ऐसा ट्रांजिट जहाँ पे पैसा अच्छा आ जाए. मुझे तो बहुत जरूरत है आज की तारीख में. My next question, you all can keep it in the back of the mind. Transit Saturn on natal Rahu. निकल राहु पे ट्रांजिट गोचर का शनि. पैसा कन्या कब में आएगा? है। पैसा ट्रांसिट नेटल पे नहीं पैसा कब आएगा? पैसा कब आएगा? जैसे धनेश
का दशा है गणेश केंद्र में है सेकंड लॉर्ड इट इज इन particularly in 10th and 5th house. So and 8th house Ganesh. So it is suppose it is a Kanya Lagna and second lord Shukra. It is in 8th house and it is a combination of Lagnesh and Shukra. So either transit Jupiter natal second house मतलब तुला का Libra or either Mesh. It is a transit on natal. So sudden benefit of inheritance benefit or any of it is a from share market or financial investment. It is a 4 to 5 time benefit. It is a definitely it is a Madam, one thought. And I'm not going to go without asking her the remedy for Rahu. She has one secret remedy for Rahu. रेमेडी शी गिव्स मुझे तो दिया था खिचड़ी दी थी हर बुधवार को खिचड़ी देनी है सालों से दे ही रही हूँ शी हैज गिवन मी Every Wednesday, give एवरी khichdi. वेडनेसडे आई यूज्ड टू गिव पुअर पीपल खिचड़ी Okay. शी हैज गिवन मी अ So, रेमेडी what is khichdi? If listeners do not know, just type khichdi. Khichdi is a combination of rice and dal. Dal. Moong. Moong kala. Moong and rice. Combination of that, but it is a raw because Rahu is a raw. Rahu is always known for the raw food and not for the cooked food. कच्ची खिचड़ी दो Kachi khichdi. Acha, देना है. kachi khichdi. Dal. It's Pakana only nahi. nahi. You don't have to give So you just take Kachi. rice and you take सब moong. मिक्स कर खिचड़ी करके तब Rice and moong, that's it. And give it on a Wednesday. And the one if the person are with the Rahu Shukra aspect hai, and many times it so happen that he himself really doesn't want, but he is going to drag towards the female so much that family get insecure very fast. In that case, the aluminium button. Aluminium. button. Where- In where? that you have to keep the copra pak, any yellow sweets, any of the yellow sweets, and you have to give it to the very lower people. Okay. And it is going to control the Rahu in a very great manner. Achha, And it's a if- very proven reason. Okay. So Rahu Venus aspect. Yeah. Okay. And in such people, लोग शक करेंगे आपके ऊपर. नहीं वुमनाइजर पर्सन रेमनाइजर यानी ज्यादा attractive अट्रैक्ट हो जाएंगे बिफोर वुमन यानी फ्लटरिंग फ्लटरिंग एंड ऑल काइंड ऑफ लफड़ाज Okay, affairs उसके होंगे. He will have affairs. This Okay, is so very to common control in that this person, Kaliyug. okay, take aluminium vessel, okay, and put yellow sweets and then gift it to any वेरी बट servants or दैट lower लोअर servants. नहीं नॉट समन Not इट शुड बी वेरी लो लाइक Beggars. स्वीपर लाइक मेनली स्वीपर Sweeper. Okay. Give it to sweeper. वर्क आउट वेरी फास्ट Okay. So his Rahu gets control या राहुल गेट्स वन and he'll stop cheating, whatever. Okay, that's good. That's good. Even And for a Shani Rahu, you have to take the black color pot. Huh. In that, you have to involve every dravya of a Rahu. Black color? pot. Pot. मटका। Matka. Okay. इनके अंदर सब राहु की चीजें डाल के Like मूंग उड़द की दाल moong. उड़द की दाल एक्चुअली सेकंड में आती है पर राहु के लिए चलती है ओके देन यू टू गो फॉर अ बैंगन यानी Then brinjal. Brinjal. Okay. ब्रिंजल उसके अंदर डालना है दैट गन्ना शेडी जो बोलते हैं गन्ना, गन्ना गन्ना, Sugar Sugar cane. cane. Okay, sugar cane you got to put. Okay. Okay, and then this khichdi kind of a thing, and lead, sisa bolte हैं ना? Lead That all pieces of things lead. you have to involve in that matka. You have to cover the matka. Okay. Then in any of the place, one person has to sit, has to do 15 days Mahamrutyunjay jap. अच्छा. With this. ये रख देना है घर पे. फर्स्ट नहीं वो रख के उनको महामृत्युंजय जाप करने के लिए बैठना है फर्स्ट डे दे हैव टू कॉल द पर्सन फॉर द संकल्प Okay. जिनको शनि राहु है उनको पंडित जी ये यू कैन नॉट डू दिस पंडित जी This is only Pandit ji. Okay. एंड एट द 15th day they have to call again to the person एंड वो पर्सन के पास वो महामृत्युंजय जाप हो जाए उसके बाद उसको पानी में बहाना दिस इज अ वन टाइम सॉल्यूशन फॉर द शनि राहु एंड व्हिच वर्क्स रियली अमेजिंगली इट्स गिव्स 60 to 70% result. Okay. For our younger audience, what is the problem caused by Shani Rahu conjunction? क्या होता है इसमें? उन लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम आने से ज़्यादा in this world they really want to achieve something or other. If they cannot able to achieve, then they are going to use the many tricks for that. And Okay. People with Shani Rahu combination. it's not always it is that, but
is connected with the houses. Okay. But if the fifth house is there, so for the entertainment, for the love, they can do any kind of a thing. And finally it's going to go in a loss of himself and the opposite party. Okay. That's what you want to know, right? Yeah. Please. What is it? So do this remedy for this. What's your best remedy? What's your best? One for Rahu, one thing I have, never keep dark when it is going to Rahu. घर में हर it should not be dark any one bedroom. हम लोग क्या करते हैं, it is a normal tendency. हम लोग हॉल में लिविंग रूम में है, बाकी के लाइट बंद रखो. But after 6 घर का एक भी लाइट में कोने में अंधेरा नहीं होना चाहिए. It should not be dark. And it is a fragrance. यहाँ पे darkness आती है, odor, smell or anything, Rahu come first. When you enter anybody's house, if smell is odor or Means it bad, is bad smell. bad smell, So like then- no then is feeling Rahu it is is bad, Rahu bad is Rahu. bad Rahu. Okay. So it should be light, blowing up the fresh air, and one thing it is a fragrance. It's really uplifting. Good Fragrance, good fragrance and fresh So make flowers. sure Rahu positive. And Rahu fresh Dasha. flowers, Rahu Dasha. Fresh flowers. Fresh flowers. हाँ, Keep it fresh is- flowers. Fresh flowers. It definitely gives a it is a clear negativity. So keep even it's full night. Okay, keep all the lights on Till at least 10, 11 o'clock. till 10, 11 o'clock. Okay, that's a very good remedy. Guys, practice it and give us feedback. Most important is feedback. Okay, give us feedback. ये करने के बाद after you do this, okay, your Rahu Dasha is improved. Okay, and Madam Jollyben, हाँ जी. what's your good remedy that you found working? Something unique, something that anybody can do. मैं तो मंत्रों में मानती हूँ, अच्छा, गायत्री मंत्र. गायत्री मंत्र. लेकिन हर इंसान ब्राह्मण नहीं होता, वो नहीं कर सकता. भगवान अपने इष्ट देव को याद करो बस, इष्ट देव. जो है अपने. अच्छा, tell me now, transit Saturn on natal Rahu, गोचर का शनि अपने कुंडली के राहु से अगर गुजरता है तो क्या रिजल्ट देगा? Of course, वेरी करता है. आई थिंक डिपेंड ऑन द विच हाउस इज हाँ, मालिक ऑफ. I'm जैसे कि serious. कुंडली में 10th और 11th का मालिक है, हाँ, उस हिसाब से वो रिजल्ट देता है. राहु नहीं, वो तो है. समटाइम राहु स्पेसिफिक हॉरोस्कोप में चेंज होगा, बट मोटा मोटा ब्रॉड क्या होता है? राहु And suppose it is a second Rahu and it is a pass from second or 8th house next Rahu. So 8 gives a very bad depths, sudden depths in the person's शनि life. गोचर शनि में गोचर में राहु के ऊपर. राहु के ऊपर अगर राहु सेकंड हाउस में है, या तो 8th 8th house में हाउस. है. ओके. So that all of sudden like no major setback would come if it is a dasha and second lord it is not. But second or 8 में Rahu gives a very harsh and all of sudden result. And they change the person mind. For wrong decision took place, person take wrong decision and that gives a major debts, setback, family separation. कर्क लग्न हो, जुपिटर राहु छठे घर. कर्क लग्न, जुपिटर राहु छठे घर. हेल्थ Transit प्रॉब्लम तो Saturn. देता ही है का. ट्रांजिट सैटर्न विल गो ऑन. हेल्थ प्रॉब्लम तो आपको दर्शन ट्रांजिट गुरु राहु इज देयर एंड शनि ट्रांजिट हो रहा है तो हेल्थ Rahu is इश्यूज. there. हाँ, छठे घर में, और शनि अभी गुजरने वाला है. सामने से केतु अट्रैक्टेड है. It's going to affect the health, yeah, of course. But little bit of it's going to give a benefit also. And Why benefit? Give a benefit. it is in fact free from debts or free from like rog, rum, shatru. And 12th house ascendant is coming the 6th house. It is going to, and उसके ऊपर से जब राहु पास होता है, minimize your pressure of money. Yeah, it's minimized. And it is a one thing, it is a major setback, major changes. And Dhanu, if it is a Jupiter, it is a 6th,
9 and 6, 8 and 12, which Swagrahi, that leads to a person spirituality, but it is a very different way because person पहले मतलब problems and you face everything, and the Saturn Rahu awareness make a awareness of spirituality है, ये सब so that change a person's attribute, thought process, everything person would change. Thank you so much, Jolly Ben, Harsha Ben, and Parul Ben. सर हमारे एक ही मिनट और इंटर है बिकॉज इट टू द टॉपिक है इसलिए हमारे एक जैन मुनि ने एक मंत्र दिया है मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मेरा मतलब उसने बोला था कि बुधवार को अमास के दिन रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच में वो मंत्र बोलना है 72 दिन तक बोलो चौबियार करके हमारे चौबियार मैंने 8 बजे के पहले खाना खाना पड़ता है खाना खाने के बाद ये मंत्र बोलो इट विल यू कांट इमेजिन उसका इफेक्ट यू कांट बिलीव जैसे जैसे आप एक एक दिन माला गिनोगे इट विल सी द चेंजेस पॉजिटिव इफेक्ट वाइब्रेशन यू कैन इमेजिन इतना वाइब्रेशन पॉजिटिव इतना पॉजिटिव But this is for what? Remedy for राहु what? और राहु For Rahu. और राहु What is the mantra, sir? ओम ह्रीं श्रीं नमीयूण पार्श्वविसहर विसहजीर्ण पुल्लिंग ओम ह्रीं श्रीं हरम नमः Okay, you got to type that out for me. I'll give And we'll post it under the video. I'll give you. Okay? But that is very clear between 8 to 10 every day. Or before mantra, you have to eat the food. You have to do chovyar in terms of what you can't drink and eat after 8 o'clock. Okay, so before 8 o'clock, you have to finish your And dinner. you have to do it between 8 and 10. That's 8 and 10 only. And you got to do it for 72 days. 72 days. You just see it is a miracle. And one mala. One mala. One mala. One mala. That means 108 times. Yeah, one mala. Okay. That So is all. guys, when the video is posted, okay, when the video is posted, okay, go down in the comment section. In the comment section, I'm going to post this mantra. Okay, you can do it. Okay, obviously start on a good day. Any specific day to start it? बुधवार अमास बुधवार और अमास के दिन पहला वो दिन होगा Okay, the first day has to be a Wednesday, and that too it should be Amavasya. अमावस So then वो तो साल में कितना बहुत कम बार आएगा? 2 टाइम आता है दो ही टाइम. 2 टाइम आता है Twice it comes. हाँ 2 टाइम दैट इज द ब्यूटी ऑफ मंत्र ना ऐसे चलते फिरते मंत्र बोलते जाओगे तो थोड़ी उसका इफेक्ट होएगा इट काउंट व्हेन यू स्टार्ट इसका स्टार्टिंग पॉइंट का ही तो वैल्यू है मेरे को जरा फोन करके बताओ कभी मेरे कल- बारे में भी तो सोचो यार. मेरे को फोन करके बताओ कि कल मैं कभी आता आ रहा है बुधवार अमावस. मैं देता हूँ हाँ? अगस्त में आता है Sunil, one only mantra I have this experience very good actually. They say नाम स्मरण मंत्र, नाम स्मरण. नित्यानंद स्वामी की उसमें भी है. And you are very ancient. It is a भागवत शिव पुराण. That is a one therapy. मतलब उसको जैसे ओम नमः शिवाय है या तो सोहम है और राम है. जो whatever it is you believe, but that mantra should be it's a सिद्ध मंत्र and बीज मंत्र. That is a अष्टाक्षरी पंचाक्षरी. It should not be very long. Maybe so उससे आपको सिर्फ चेंज करना है मन में. So that is a totally it is a change your aura with your breathing. No need to counting. जैसे वो cumulative counting जैसे है. But that mantra cannot be changed. You have to it is a with your it calls even ajapa jap. So after sometimes after a year constantly person gets it is with your breathing it is a inside it is a it comes and it is a change total aura. So what is the mantra? एनी ऑफ ओम नमः शिवाय इष्ट मंत्र मतलब जो भगवान में आप इट इज ए फेथ है स्ट्रॉन्ग श्रद्धा है और इट शुड बी स्मॉल. पंचाक्षरी मीन्स ओम नमः शिवाय. Shiva. देन अष्टाक्षरी? अष्टाक्षरी इट इज ए श्री कृष्ण शरणम मम इज ए अष्टाक्षरी. ओम नमः भगवते वासुदेवाय इज ए 12 अक्षरी. दैट इज ए नॉट मोर देन 12. Okay. But that is which they say that calls a नाम स्मरण और जपा जप. Okay. But that is a constantly, it is a totally change with your breathing. This when has to be done? Yes, it is a whenever free person has to just Just keep sitting on and saying think. Om Namah Just Shivaya, suppose you Om are Namah Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. ये तुमच्या मायथोलॉजी भद्रबाहु ने मंत्र दिया They change it. just- वरामीर के भाई भद्रबाहु है ना उसने मंत्र दिया था वरामीर ने तो उसने प्रिडिक्शन किया था किंग का बच्चा दिएगा यू नो द स्टोरी भद्रबाहु ने बोला था ही विल डाई और ही विल डाई वरामीर ने पूरे कम्युनिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर जैन कम्युनिटी उसने पूरा अपना टेक्निक मंत्र से सबको डैमेज करने पर देन भद्रबाहु मेड दिस मंत्र दैट्स कॉल्ड फुल्लिंग मंत्र टू प्रोटेक्ट द you from any health problem or any problem of regarding enemy, so Rahu, Ketu, enemy.
This is a very effective mantra. You will, I'm telling you, do it. It's a miracle. Which one? That's what I am giving to you. अच्छा जो आप हाँ, तो mythology है पूरा. बुद्धि जो मंत्र है. ओम ह्रीम श्रीम नमीऊन पास विसहर वसह जीर्ण पुल्लिंग ओम ह्रीम श्रीम अरम नमः. फिर गॉड संकेश्वर बिलोंगिंग उसका पूरा स्नेक का ऊपर जो है सत्र उसके ऊपर पूरा. अच्छा. दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा था पैसा का भी मिलता है. हाँ. जब भी शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन होएगा गोचर में, हाँ. नटल शनि बोलो या नटल, यू विल गेट अ मनी. यू स्टडी इट, यू विल नेवर फेल. हाँ. नेवर फेल. यू जस्ट सी द यू मंथ. आपका समझो सेटन कौन से मंथ में, कौन से राशि में? It's a Taurus. टॉरस है. टॉरस में सेटन वीनस जब भी निकलेगा तब यू विल सी दैट मंथ, यू विल गेट अगेन. हाँ. You just study, then you let me know. Fantastic. Fantastic. So transit Venus on natal Saturn. या और vice versa. vice versa. या अभी जैसे Let's test it out. अभी सेक्रेटेरियस है, जिसका बर्थ का ओरिजिनल वीनस होगा सेक्रेटेरियस, उसके 2.5 साल बम्पर जाएंगे. बम्पर. हाँ. यस, यू जस्ट सी. यू आप एक्सपीरियंस करके मेरे को फोन करना कि यू आर राइट और रॉन्ग. दिस इज माय स्टडी से. अच्छा. यस. Fantastic. Amit Bhai, guys, you guys don't know, Amit Bhai has literally served Saptarishis astrology नहीं नहीं सर. for the last 6 years, 7 years. And And everybody who comes for the workshop knows about him. Okay? But he's my dear Arre, darling. sir, Okay? Arre, nahi. Dear darling, always worries. Every day he calls up with a new idea for Saptarishis astrology to make money because he's a stockbroker. So he thinks, नहीं नहीं सर. and he's a Gujarati Jain, you know. So he thinks always positive, you know. Whereas I think दैट negative. रिटर्न इन माय कर्मा. गुरु की सेवा करना. आई एम बस डूइंग दैट फॉर मी. I mean, I'm indebted to him. Thank you so much, guys. I'm going to end this. I'm going to end this with a story. That is a moving story from the life of our Guru, Dilip Davar. I'm going to just remind you about this. Last time when you came, you had told me this. And correct me here. ऐसे काफी बार memory का problem हो जाता है. Our Guru Dilip Davar was very popular for KP astrology. And once somebody came to him and said losses in business. So he saw the horoscope or something, I don't remember. And he said, on so-and-so corner of your house, there is what you, for the clothes, you put rassi, rope for hanging the clothes for drying. So he said something about the number of knots. Yeah. या Kitna bola? 8. He said there is 8 knots. And untied, खोल के उसको कितना बनाने को बोला? 11. To make it 11 knots. Okay? Now that's a prediction. You're looking at a horoscope and telling in your house. Yeah, he just try to give, he always try to say one thing that from Kundli only, you have to see everybody's house. House. This is called Astro Vastu. Astro. 7th हाउस में क्या है, उनके सामने रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है, आपके घर में क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव. ही वाज वेरी मच मास्टर टू सी कि आपके घर में खिटी कहाँ पे है. क्या क्या? खिटी यानी खिला. खिला. Where the nail is, where in the हाँ, nail. Where you nails. can- And that nails is playing a big role for negativity and positivity of the aura to come in your house for money. He asked me for a money, na, so that. So how did he Sheila see? should be there or Sheila should not be there? No, east direction, if there is a nails, your money will come, but you cannot able to enjoy. So in east, which much, how much degree you have to keep nails, and in which degree you have to leave it. That he used to tell all these things. Yeah. He practiced. He just gave a practice like that only. That you try to see the house from the window. Wow. Wow, guys. Can show me a guy in India who can predict the number of nails or what nails should be where. I'm brilliant. I mean, this is hats off to a master. And the unfortunate part is, you know, what I always believe, you know, because the publishers are mainly from Delhi. So many writers are from Delhi. And Bombay people have not written books. They have not shared their knowledge. You know, maybe the Bombay people are too busy making money. No, it's not that. Actually speaking, Dilip Bhai Dave always used to taught us that you be in a very good in a prediction, not in a speech. So that thing has, you know, registered here. That's the reason there are 1,000 things in my mind also right now. But to explain, I think I need little Fine. time, little practice. Time is not a bad point, but I need a practice to speak and speak. Then I may be able to tell everything because he has 1,000 and 1,000 technical terms. Wow.
Why didn't you do an Astro Vastu course with her? She has committed me. She is writing book for Sakar. No, forget. We do course. I told First her, we do course. Okay? First we do course. Or whatever, the book, whichever you want. But guys, I'm saying, Yeah, he had given a very nice knowledge on this. Very nice. And along with the remedy. Can I Sure. add behalf of her? She's so good astrologer. In what? In prediction. आज मैंने उसको फ़ोन किया है रात को 11 बजे कि हर्षा बहन एक लड़की के बारे में पूछना है कि वो लड़की को लव मैरिज करनी है। तो उसने अपने घर में बोला है कि मैं 1 महीना देती हूँ, आप तैयार हो जाओ, मुझे इस लड़की के साथ शादी करा दो। I have taken a risk calling her at 11:30 night कि so and so has happened and आप क्या कह रहे हो? हर्षा बहन ने उसी समय बोल दिया she is married, check the passport in the house. oh my God. And that news was so much देश की कैसे डिलीवर करें वो न्यूज़ कि वो लड़की ऑलरेडी मैरिड है और घर वाले को फुल कर रही है। My goodness, she was fooling पेरेंट्स everybody पूरे घर को that she's going to get married, but आप she was तैयार हो जाओ already कि married. एक महीना दे रही हूँ, आप तैयार करो और मुझे इस लड़की के साथ शादी करा दो। हर्षा बहन की प्रेडिक्शन within a minute she told me she is already married. Just check passport. That was stunning. And वो 15 दिन के बाद उसने घर में बोला मैं ऑलरेडी मैरिड। और हमें 15 दिन पहले पता चला था कि शी इज ऑलरेडी मैरिड। ऐसे ऐसे काफ़ी स्टनिंग प्रेडिक्शंस इन्होंने दिया है विच लगता है कि बहुत बड़ी बात है। साइंस इज ग्रेट And she's had a एंड द great कॉम्बिनेशन व्हाट शी यूजेस आई एक एग्जांपल नहीं है मेरे पास, 2-4 एग्जांपल। तो ये भगवान तो नहीं है, 100 में से 90% शी गोज करेक्ट, 10% तो उसको भी पता है कहीं मूड नहीं होगा, राइट नहीं देखा होगा। तो भगवान ने उसको बहुत अच्छी ताकत दी। एंड शी इज वेरी वेल एजुकेटेड वुमन, शी इज MBA फाइनेंस। उसके बाद उसने एस्ट्रोलॉजी में गए हैं, वो भी उसने अपने घर में छुपा के कराया। पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी। मेरा और शी आपका इज स्टोरी वेरी वेल एजुकेटेड वुमन। मैं मेरे डैडी को बोलता था, मैं बैठ के जॉब एप्लीकेशन टाइप कर रहा हूँ, उसमें बैठ के किताब पढ़ता था मैं इंटरनेट पे ज्योतिष पढ़ता था। चलो ठीक है, 2 साल निकल गए। गर्ल इज अ मास्टर। नहीं होता है इस मास्टर। कल मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, यू कैन आई एम शॉक। क्या हो गया? उसने मेरे को देख के खाली उतना बोला कि यू हैव 2 चिल्ड्रन। सुनो तो सही, अभी आगे तो स्टोरी सुनो। मेरे को देख के बोला कि सर यू हैव 2 चिल्ड्रन। मैं बोला यस। 2 चिल्ड्रन में 4 साल का गैप है। मैं बोला नहीं सर 6 साल का है। फिर अरे नहीं, फिर 1 सेकंड के बाद नहीं सर सॉरी 4 साल का ही गैप है। अच्छा, you had forgotten it. नहीं मैंने मेरे डेट से कैलकुलेशन करता, मैं 2 चिल्ड्रन के बीच में का गैप, मैं मेरे मैरिज से डिस्टेंस कर रहा हूँ। ओके। और थर्ड प्राइवेट बोला बिकॉज वीडियो शूटिंग तो मैं नहीं बोल सकता। वो बोला दैट इज नॉट दैट माई सेल्फ माई वाइफ एंड माई फैमिली 4 पीपल नो इट दैट ही प्रेडिक्टेड। चार मेरे ब्रदर को भी नहीं मालूम। माई ब्रदर डोंट नो, माई फादर मदर एंड माई वाइफ एंड माई सेल्फ, 4 आदमी को मालूम है। वो चीज़ भी उसने प्रिडिक्ट किया। Just by looking at your face. हाँ, जस्ट लुकिंग एट मेरा कपड़ा देख के बोलता है यू मार्क्स ऑन सो एंड सो एवरीथिंग। बता अभी आपका बर्थडे भी बता सकता है विथ योर स्टैंडिंग पोजीशन है। मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर। Guys, you are missing something. A great workshop. I hope you guys are happy. Great workshop. All right, we have missed our lecture from there, so we're now going to rush back in. Love you guys. Write your comments. Encourage our gurus. Thank you. Thank you so much. Then he said, please think on this fundamental question of astrology. Why are you born in so and so lagna, Taurus lagna, Karka lagna? Why not in some other?